नमस्कार, बनेगा स्वस्थ इंडिया सीजन 9 में आपका स्वागत है। जब हम स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं और खास करके एक ऐसे देश के स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले ध्यान जाता है बच्चों पर। अगर हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे तो देश को वो आगे ले जा पाएंगे। तो अब चलते हैं सीधा अयोध्या और मीनाक्षी पायल के पास चलते हैं। मीनाक्षी जो हैं वो मोजाटो की हेड ऑफ आर्ट प्रोग्रामिंग है। पायल बच्चों के साथ हैं और ये बच्चे एक नए अंदाज में हमें आज पूरा दिन दिखाएंगे कि जब स्वास्थ्य की बात होती है तो उनकी क्या सोच है। पायल, We talk about recycling water, waste and energy, but we are right now, recycling the spaces create a much greener impact, and here what we are doing here in Mojato, we are creating, recycling the spaces. We have kids with us, which you can see. It's a 200 feet long wall which we are covering today with the kids. We have kids from our international school who are painting this beautiful wall, and हमारा लक्ष्य ये है कि आज 5 बजे तक हम इस वॉल को, जो कि 200 फीट लंबी है, उसको पूरा कर लें। और हमारा कहना ये है कि जब हम इस तरह की जो आर्ट है वो एक सॉफ्ट पावर है, और उसके थ्रू जो अवेयरनेस और एजुकेट हम लोग कर सकते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और किसी भी प्रोजेक्ट की जो नींव है वो होता है हमारी जनरेशन, हमारी सोसाइटी। और इन बच्चों को आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो लगे हुए हैं हमारे साथ। अवध इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं जो लगातार पेंट कर रहे हैं, और जो नीति है एक हमारी आर्टिस्ट बेंगलोर से, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सोचकर इसको जो हमारे मोटो है उसको कवर किया है। नीति, मैं आपको बुलाना चाहूँगी यहाँ पर, आइए और बताएं कि जब आप ये पूरा प्लान कर रही थी तो क्या था आपके दिमाग में, और क्या आप 5 बजे तक हम क्या देखेंगे इस वॉल पे? हम स्वच्छता को प्रमोट कर रहे हैं, एंड वी वांट टू एनकरेज हेल्थी गुड हैबिट्स। एंड क्या पेंट है आप, क्या मतलब एक्रेलिक पेंट कर रहे हैं, एंड वी वांट ऑल द किड्स टू बी इन्वॉल्व्ड एंड लर्न अबाउट गुड हेल्दी प्रैक्टिसेस लाइक एक्सरसाइजिंग, डूइंग योगा, सैनिटेशन, एंड वी आर डूइंग दिस थ्रू दिस अमेजिंग म्यूरल एक्टिविटी। अब चलते हैं, कुछ बच्चों से बात करते हैं जो कि यहाँ पर हैं हमारे साथ में, कि जो बच्चे हमसे बात करेंगे। बताइए, जब हेल्थ और हाइजीन को क्या इम्पोर्टेंट है, कितनी इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य आप? Health is very important for us, and as we all know that today is 2 October and it's Gandhi Jayanti, and we all know that Gandhi ji was very much Gandhi ji was giving very much importance to hygiene and health and to cleanliness. So today we are doing painting here, and we are feeling very much happiness. And थैंक यू। हमारे साथ हमारा बैंड भी है चेक मार्क, जिसको जो हमारे साथ बच्चों को काफ़ी इनकरेज कर रहा है। आइए उनसे सुनते हैं कि एक छोटा सा गाना। So this is a check mark band which is from Ayodhya. They are here to encourage these kids, this young generation, and पीछे आप देख सकते हैं लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का हम लोग आर्ट वर्क कर रहे हैं। ओके, सो आपने देखा, हम शाम को एक बार फिर आपको दिखाएंगे कि क्या हम कर रहे हैं और क्या हमने अचीव कर लिया है, हमारा लक्ष्य हम किस तरह पा पाएंगे। जो बच्चे हैं ये, इनको मैं पूछना चाहता हूँ, इनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि क्या डिज़ाइन बनाना चाहिए? सर, हमारी जो इनके अपनी आई जस्ट आस्क देम, आप लोगों को जो कलर अभी आप कर रहे हैं उसकी प्रेरणा मतलब बनाया नीति ने, पर कलर्स आप चूज कर रहे हैं तो क्या आपके दिमाग में है? उसके बारे में भी बताएं। मतलब बहुत अच्छा है ये, और हम लोग जब कलर करते हुए बहुत अच्छे कलर्स हैं, इसको हम लोग प्रेरित करता है जो ड्राइंग है कि स्वच्छता कैसी रखी जाए और कैसे इन्वायरमेंट को क्लीन रखा जाए।
ये हमारी इन्वायरमेंट को दिखा रहा है, उसकी सुंदरता को, कि मतलब कि किस तरीके से ऐसे ही हमें अपनी ज़िंदगी में भी रंग भरने हैं, और एक तरीके का हमारे सामने विजुअल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है कि हमें कैसे अपने इंडिया को बनाना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपने छोटे छोटे कदमों से अपने इंडिया को स्वच्छ बनाना है, और जब इंडिया स्वच्छ बनेगा तभी स्वस्थ बनेगा। वाह, जी, जी। तो सुना सर आपने, जब इंडिया स्वच्छ बनेगा तो स्वस्थ बनेगा। काम जारी है, हम अपने लक्ष्य को पाएंगे, और शाम 5 बजे के करीब हमारा गोल है कि हम इसको पूरा पेंट कर दें और आप हमें इसके साथ देख पाएं फाइनल प्रोडक्ट। Thank you so much, Payal. We're going to be coming back to you. And this hour, we are going to be talking about that how in the last 75 years, India has progressed on major healthcare indicators since 1947. In 1947, the life expectancy of an average Indian citizen was around 32 years, which has increased to 70.19 years in 2022. The increase in life expectancy in the last 75 years has been over 100% due to the better availability of treatments, medicines, and rapid advances in technology. This hour, we discuss the big game changes in healthcare in the last 75 years. We will also talk about how we can do better. Joining us is, let me introduce the panel, Karnataka's Higher Education and Skill and Entrepreneurship Minister, Mr. Ashwath Narayan, Suchitra Ella, co-founder and joint managing director, Bharat Biotech, Padma Bhushan awardee, Dr. Chandrakant Pandey, founding member, International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders, Padma Shri awardee, and Dr. Dilip Mavalankar, director, Indian Institute of Public Health, Gandhinagar. Thank you all so much for joining us. So we're going to be talking about the game changers. Dr. Pandey, I would like to start with you first. When we talk about universal iodization of salt, you're also known as the iodine man of India. India started this way back. Tell us, how did this whole journey evolve? Because today we see a huge difference on ground. The story of iodine deficiency started in India way back in 1948. My mentor, Dr. V. Ramalingam Swami, had gone to Oxford. There he met Robert Carrison over an evening glass of wine. Okay. So have a wine in the evening. There he learned that Robert McCarrison could not find the cause of goiter, which is a swelling in front of the neck. I have seen such big goiters, like pumpkin size in my life, in Uttar Pradesh, Bihar, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. Itna bada dekha hai maine, itna bada. Ji. Dule. So, Robert McCarrison could not find the cause of goiter. He told Dr. Ramalingam Swami that when you go back, please carry this journey forward. So it was in 1951, Dr. Ramalingam Swami established that it is the iodine deficiency which causes goiter. Yes. And then he launched an experiment in Himachal Pradesh called the famous Kangra Valley study. It is the world's largest study. Way back in 54, can you imagine? 1 lakh children were included in that. 1 lakh बच्चे में उसमें शामिल किया था. तो उसमें क्या था? 3 groups बनाए थे. One group received iodized salt, one iodated salt, one was controlled. Within 5 years, when they repeated it, the goiter prevalence dropped from 42% to 21%, 50% reduction. And next 5 years, it came to less than 10%. The area that did not receive iodized salt, it remained the same. So this is the famous Kangra Valley study. It was on the basis of this study, the government of India launched the National Goiter Control Program in 1962. But you must realize that India was fighting with smallpox, cholera, tuberculosis, malaria, so it didn't get a low priority. So my journey with iodine started in 1978 when I studied. I took it as my thesis topic way back in 1978 when I was doing my MD. Dr. Nath was my head of the department. Dr. Raman was my mentor. Here I must tell you, मेरे जिंदगी में गुरु का बहुत महत्व चल रहा है. There are 2 kinds of teachers you meet in life: those who are mentors and those who are tormentors. So I was lucky to get mentors in my life. I was very lucky. So उसके बाद I did my first work on MD. I got a paper published in Indian Journal of Medical Research while I was doing MD. Endemic goiter in Delhi. It was not reported. So when I went for my MD exam, examiner के 2 पेपर थे, मेरा एक था. मैंने बोला आपसे क्या पूछूं, आप चलो आप पास हो गए.
Then I went for registered for PhD in endocrinology at AIMS. Okay. And that's where the major contribution from my team came in. It was a teamwork. I worked in Bihar, UP, Kerala, and Delhi on looking at the other iodine deficiency, its consequences, deaf mutism, psychomotor retardation, difficulty in walking, change in other autism. ये मैंने document कर दिया. And these findings I presented to Mrs. Indira Gandhi in 1984. And then she took a decision, Dr. Panda, what should I do? I said, Madam, the whole country is affected. It's the changes are irreversible. Please start universal salt iodization program. That was started in 84. USI. Okay. I must tell you, That's amazing. Amitabh sir, Pranav, today India's 93% of India's population is consuming iodized salt. 93%. We are the global leader. Swami Vivekananda said in 1897, 50 साल के बाद मेरा हिंदुस्तान आज़ाद होगा. 97 plus 50, 47 we got independence. He said, in the 21st century, my India will be the Vishwa leader. मेरा भारत विश्व गुरु होगा. तो इस कार्यक्रम में जिन मैंने पिछले 45 साल से काम कर रहा हूँ, 45 years I've been dedicated, we are विश्व गुरु. We are विश्व गुरु. मुझे स्वामी जी आपकी एक इच्छा तो मैंने पूर्ण की जो मेरे हाथ में थी. So we are Vishwa Guru in iodine deficiency disorders program. That's why they call me iodine man of India. 45 continuous work. हम पांडव है, मैं अर्जुन पांडव बना. मैंने पक्षी की सिर्फ दाई आंख दिखाई दी. I only saw the right eye of the pakshi that was on the tree. बाकी मैंने कुछ नहीं किया. I must thank my family. Yes. Because I led a life. Amitabh ji, I used to travel for 200 days out of 365. हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहे, डाक बंगले में रहे, काफ़ी सारी मेहनत ली. I also met the famous bandit in Gonda, फूलन देवी. She said, डॉक्टर साहब मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं आपका नाम बहुत सुना. मैंने बोला आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे आपका आशीर्वाद. He said, then she left one gunman with me for my protection. मेरे पीछे कौन मारेगा मुझे? मेरे पास जो है आपकी इज्जत करना चाहती हूँ. तो फूलन देवी के लिए I had X security that time, Z security. Back in 1980s, Z security. So I think because of the credible work you've done today, goiter is virtually disappeared from India. It is and we're going to be eliminated. You don't see it at all. At all, yeah. It is a part of the history. No, I think And most important, children who live in iodine deficient environment have 10 to 13 IQ points less. Yes. So my contribution, my team's contribution, we have said 400 billion IQ points, 400 billion हमने जी बचाए. वही IQ का भी एक सवाल था कि what is the connection? I'm going to be coming back to you. We're just going to ask Dr. Mavlankar a question. So I would like to ask you that you've been working in the public health space for years now. 75 years, India has achieved a lot when we talk about healthcare. What do you think has been India's biggest achievement according to you? Yeah. As a public health person, I must tell you that when we became independent, and before starting, I must remember Gandhiji's contribution not only to our independence, but his wisdom about health. What he said is gold and silver are not the real wealth of the nation, but health is the real wealth of the nation. So he also recognized that. What I think, as we became independent, the British had created a health system which was to deliver health to their armed forces. So that is why there were military hospitals in big cities and there were civil hospitals, some to the British and Indian servants of the British Raj to get treatment. But there was no health system almost in rural areas of India. So the first thing, and of course it was British officer, Sir Joseph War, who was commissioned to survey what is needed for rural India. And after independence, the whole primary health care system which we created with more than 25,000 health centers, which is one for 30,000 across India, more than 150 sub-centers with nurse midwives and now community health officers, one for each 5 villages. And now very recently under National Rural Health Mission,
the ASHA workers and community health officers. So today we have the foot soldier of the health system in each village, which is unimaginable when we were becoming independent. So I would say, as a public health person, this is one of the main game changers. And all countries who changed their health system did it. China did it in the 70s through their barefoot doctors. Malaysia, Brazil, and other big countries, diverse countries, created a workforce, because a villager who lives in a village of 500 or 1,000 is 20 kilometers away from an MBBS doctor, is 50 or 100 kilometers from a specialist, and maybe 200 kilometers from a district hospital. So if he falls sick at night or has a difficult delivery, some woman, who is the person? So that is the first game changer, I would say, that expansion of our rural health services. Of course, we need to do more, but it is, and we saw how our ASHAs, ANMs, medical officers, other laboratory technicians worked in the rural areas and prevented COVID and as well as provided the care. Second, if you want to count the successes of public health, was smallpox eradication, which happened in 1977, started through vaccination programs 200 years ago by the discovery of vaccine against smallpox by Edward Jenner in Britain, and later on through WHO and other international efforts, we eradicated smallpox. Not only vaccination was available for 200 years, but surveillance, where it is happening, how it is getting transmitted, how can we stop the transmission, ring vaccination, and we throughout the world removed smallpox, which is a major curse in public health and infectious disease. Similarly, polio eradication, immunization program, the child health improvement. At the time of independence, almost 150 to 200 children were dying in the first year of life after birth, as compared to now less than 30. Maternal mortality, delivery, it is not a disease. Delivery is not a disease. It is a normal physiological process. But the estimates of mothers dying in delivery was almost 1,000 to 2,000 mothers dying per lakh of deliveries, 100,000 deliveries. So 1% mothers were dying just in the process of delivery. We have reduced that to less than 100. So these are some of the big achievements and game changers. Of course, we can discuss more, but I don't want to take up all the time. But we can further think of what we can do and what we have also achieved. यस बच्चन साहब, मैं आपके पास आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ. देखिए, जब इस देश ने मिशन मोड में कोई चीज़ की है, एक कैंपेन के तौर पर, जैसे अभी पांडव जी भी बता रहे थे और डॉक्टर मावलंकर भी बता रहे हैं, इसमें पोलियो का भी जिक्र हुआ. अभी जैसे हाल फिलहाल कोविड की वैक्सीन हुई, मिशन मोड में हुआ, और पोलियो का ही हवाला दिया कि हमारे पास वो पूरी कैपेबिलिटी है कि हम मिशन मोड में जल्दी से कोई चीज़ कर सकें. पोलियो में आपका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है. यू हैव लेड दैट कैंपेन. आपका क्या अनुभव रहा उस कैंपेन में? शुरुआत में जब ये पोलियो वैक्सीन 2 बूंद ज़िंदगी के हमने शुरू किए, उनमें बहुत कम लोगों ने विश्वास किया. उनमें थोड़ा सा भय था, पता नहीं कौन सी दवाई दी जा रही है, और काफ़ी हमको कई जगह पर विरोध भी हुआ इसका. लेकिन लक्ष्य ये था कि बार बार उसको बोलते चले जाना है और काम करते चले जाना है. और 8 साल के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज भारत जो है वो पोलियो मुक्त हो गया है. कई बार ऐसा हुआ कि एक ही कैंपेन को, क्योंकि हम उसी तरह की बात बोल रहे थे, तो लग रहा था कि हाँ चलो ये तो बोलने आ गया है, कुछ करना उड़ना है नहीं इसमें. फिर जो कैंपेन डिज़ाइन कर रहे थे उनको लगा कि इसमें थोड़ा सा बदलाव लाया जाए, और उस बदलाव की वजह से थोड़ा सा परिवर्तन आया. तो जब हमको यूनाइटेड नेशंस में बुलाया था सम्मानित करने के लिए, तो उन्होंने बताया है कि एक जो कैंपेन के लोग थे, वो जब एक महिला से पूछने गए गांव में कि अभी तक तो आपने इसका विरोध किया था, अभी आपने अचानक कैसे हाँ बोल दी.
बोले नहीं साहब, वो अमिताभ जी आए, बहुत गुस्सा थे, वो बहुत जोर से बोले, हम डर गए और डर के मारे हमने 2 बूंद डाल दिया. So sometimes, you know, imposition of a character from a film that you played, it works magic. So that, and also sometimes, well, for me, I can say that sometimes when you give a personal example, it has a lot of effect. Right. So when I do the TB campaign, I say I'm a TB survivor, because in 2000 I was diagnosed with spinal tuberculosis. And the fact that we are wanting to say is, get yourself checked, you know, go and get yourself checked, because there are cures for it. Yes. इलाज हो सकता है इसका, अगर आप सही समय पर जा करके अपना बात कर सकें, उसकी चेकिंग करवा सकें. Earlier detection, the better. Absolutely, also, yes. right? Yeah. Or same thing I'm doing for hepatitis B, because I mean, I keep repeating it all the time, that I'm surviving on 25% liver because of a wrong virus that was put into me in my 82 accident when I was given extra blood. But the fact is that because it was identified, उसकी जांच करवाई और सही समय पर पकड़ा गया, तो ऐसा माना जाता है कि you can survive on 12% liver. So I've lost 75%, but I'm, you know, still working because it was identified, it was checked. Right. These are the things that need to be told. Sometimes जो लोग कैंपेन करते हैं ना, वो अगर स्वयं बोल सकें, देखिए मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैंने अपनी जांच करवाई, उसका इलाज हो सकता है, और आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो उस इलाज की वजह से खड़ा हूँ. I think these matter a lot. Many a times, the people who do campaigns, they, for the person who's looking at it, कहता है यार ये तो ऐसे ही बोल रहा है, इसको कुछ बोलना उन्ना है नहीं, या सुनना भी नहीं है, क्या मानेगा, हाँ चलो ठीक है. But when you give a personal example, they feel sort of connected to the campaign, and that works magically, actually. Correct. Very true. जी पांडव जी कुछ बोलना. I would say in 2 बूंद जिंदगी के आपका ट्यूबरकुलोसिस कैंपेन, हेपेटाइटिस कैंपेन जो है, you are also part of the game changer, Amitabh ji. You are also part. This is a story where there is a teamwork. It's a teamwork. But people take inspiration when you share the personal life story. Later on, when we have time, I have got Parkinsonism disease. I have got Parkinsonism. And I would be probably the first patient in the world who is cured of Parkinson. I'll tell you that story. I'd be very interested. I'll tell you that story later in the program. श्योर ओके. इससे पहले कि हम और बातचीत करें, इसको और आगे बढ़ाएंगे, एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं जो इस बार की मुहिम का हिस्सा है, और उसके लिए मैं ज़रा खड़े होकर के इधर, बच्चन साहब मैं चाहूँगा कि आप देखें. ये दरअसल भारत का नक्शा है, और ये नक्शा यहाँ पर लगाने का उद्देश्य ये है कि स्वास्थ्य से संबंधित लोगों ने क्या संदेश दिया है, लोग अपनी तरफ से उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में किस तरीके से उतार रहे हैं, उसके बारे में कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं. तो वो संदेश हमने उनसे कहा कि आप वो संदेश हमको दीजिए, और वो संदेश हम इस नक्शे में डाल करके जहाँ जहाँ से संदेश आएगा वो इस नक्शे में हम दिखाएंगे. So, you know, for India, for all of you, we've been asking you to tell us your Swasth mantra. You send us your picture, what health means for you, what is your magic mantra to keep healthy, and, you know, some lucky winners will get Amazon vouchers. So, I mean, come on, India, send us your health mantra, the picture, tag it with the hashtag Banega Swasth India, and you could win a lot of prizes and get a chance to get your image right here on this map. All right, we're stopping for, we'll stop for a while, and we are in fact clearing the stage so that you can see a performance. In just a short moment, we'll have that performance on screen. I need help to get down. नहीं रुकेंगे, सबको स्वस्थ करेंगे, पूरा स्वस्थ करेंगे, नहीं थमेंगे, नहीं थमेंगे, अब ठान लिया है, मंजिल पाके रहेंगे.
हैपेंड अंबिका? ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीमामृता। मैं जो नेक्स्ट सॉन्ग सुनाने जा रही हूँ वो फिल्म जुग जुग जियो में मैंने गाया था और बहुत लोगों ने पसंद किया। एक पुरानी ठुमरी है, उसका नया इंटरप्रिटेशन था। कॉर्ड्स। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे। रंगी सारी है, रंगी रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे।
चुनरिया रे रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे तुम्हारे नजरिया सवरिया रे तुम्हारी नजरिया सवरिया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Right. Amitabh Bachchan. From front, back, back. Thank you so much, Kavita ji. Please do stay on. We'll just have a quick conversation with you. Bachchan sahab, After you. Apna ji. आइए आइए please. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना सुंदर था ये, बहुत बहुत That was धन्यवाद। brilliant. कब कोरियोग्राफ किया ये सब? अभी कविता जी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर संगीत का महत्व स्वास्थ्य के लिए. What does this mean for you? बहुत ज़रूरी है, Okay. बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम डेली रियाज करते हैं और सुरों की सफाई और गले की सफाई करते हैं, तो संगीत में भी बहुत ज़रूरी है क्लीनलीनेस। तो मुझे लगता है कि वो जितना हम क्लीन रखेंगे वो हमारी पर्सनैलिटी में झलकता है। जो भी हम जिस तरीके से रियाज करते हैं, जिस तरीके से सुरों की साधना करते हैं, क्लीनलीनेस रहती है हमारी पर्सनैलिटी में, वो सारा झलकता है। कुछ मुझे लगता है कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में, वो पर्सनैलिटी में झलकता है। जीवन में हमारे 7 सुर होते हैं जी जैसे कि संगीत में 7 सुर, वैसे हम सब के जीवन में 7 ही सुर होते हैं। जी जरा से भी सुर जो है अगर बिगड़ जाए तो गाना भी बिगड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ज़रा सा मतलब बोलते हैं कि जी हाँ, बेसुरा हो जाए तो बस गाना बेसुरा हो गया। हाँ हाँ हाँ, इसी तरह हमारा जीवन भी बेसुरा हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। कविता जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे शुक्रिया, बात करने थैंक के यू लिए. सो मच। धन्यवाद। Brilliant. We're going to stop for a short break at this moment, but this program continues. Banega Swasth India. Join us in our Laksh. नहीं रुकेंगे सबको स्वस्थ